I got the juice like a snow cone, ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. Senoritas going loco, make it bounce like a pogo. All my haters see rojo, they big mad cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode, I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, you some basic B-roll. The world is mine like my name's Pacino. Hey, it's Nico, I guess I'm back. Catch me in the fast lane on the right track. And my shorty is a 10 like a dime bag. Got me feeling like a millie, check the price tag. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, ain't no time for pit stop. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, cause my style. No time for daydreams. All my brothers get money, we call it gangrene. Just another day, but our focus still on the same thing. Us against everyone else, I recommend you change teams. Who the hottest in the city? We the top two. You said your music was litty, but that is not true. Just being honest, you should really just stop, fool. Matter of fact, empty no pockets, give me that watch too. My mind is wicked, that's why I spit it so hostile. Freaky girls in the crib, it's like I live in a brothel. All I spit is Leviticus, but I'm not an apostle. My nuts hang low, long and then colossal. Black trader black, she messiah to the misfits. Run circles, run these rappers till my shit splits. You a little late to the party, baby, I've been lit. If you ain't on the friend list, you better mind your business. Ooh, got the party jumping like crisscross. Ooh, got the gold chain and the wristwatch. Ooh, pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, ain't no time for pit stop. Ooh, got the party jumping like crisscross. Ooh, got the gold chain and the wristwatch. Ooh, pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, cause my style. ऑलराइट गाइस, सो वेलकम बैक एंड क्विकली एक और कंफर्म करो आप लोग चैट में आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा है, एंड सो दैट वी कैन प्रोसीड. व्हाट्सअप ब्रो? आई एम गुड ब्रो, कैसे हो आप? बढ़िया, सब चंगा, मजे में? एक बार कोई कंफर्म करो इसमें चैट में कि आवाज कैसा है, एंड इफ इट इज ऑल गुड देन हम लोग स्टार्ट करते हैं. ठीक है, क्विकली. आ रहा है आवाज? ठीक है, परफेक्ट, वॉइस इज क्लियर. ठीक है, थैंक्स फॉर कंफर्मिंग. तो बेसिकली क्या करना है अभी आज का प्लान रहेगा कि डिस्कस करते हैं थोड़ा ओवरऑल बायस कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड इफ यू रिमेंबर लास्ट वीक बताया था एग्जैक्टली, यू कैन, आप लोग देख सकते हो पुराना लाइव जाके, एंड समवट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी के अकॉर्डिंग प्राइसेस वाज देयर. ठीक है, ज्यादा कुछ खास मूवमेंट नहीं था. अगर आप देखो तो हमारा डिस्कशन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, पर्टिकुलरली ये जो मंडे का कैंडल था, तो था प्लान में कि प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है. ठीक है, मतलब अक्यूमुलेशन फेज में रहेगा. एंड अगर आप देखो तो प्राइस एक तरीके से एक रेंज में ही था. ठीक है, तो अभी क्या, अब आगे क्या प्लान कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, एंड क्या करेगा आगे. मोर और लेस सारे पेयर्स में, फॉरेक्स में पर्टिकुलरली ऐसा ही है. थोड़ा सा इंडेक्स वगैरह अगर देखोगे तो इंडेक्स में मूवमेंट था, एंड अगेन इंडेक्स थोड़ा बुलिश चल रहा है, तो उस पर भी डिस्कस करेंगे.
इनफैक्ट बिटकॉइन वगैरह में भी क्या भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा ट्रेड था, आपको बताया था, राइट। उसके बाद ये जब मेरा टारगेट हिट किया तो अभी लास्ट कपल ऑफ डेज से मैं इससे दूरी बना के हूँ। अगेन दूरी बनाने का रीजन है कि टाइम फ्रेम जो मैं पर्टिकुलरली ट्रेड कर रहा हूँ अभी उसके हिसाब से चीजें अलाइन नहीं हो रही है। मेरा रहता है डेली का बायस एंड यू नो दैट कि मेनली मेरा एग्जीक्यूशन 1 आवर और 15 मिनट्स में रहता है। अभी मैं सेशन ट्रेड्स पे कम फोकस करके आइदर मैं वीकली ओवरऑल आइडिया से चल रहा हूँ कि वीकली फ्रेम में क्या एक्सपेंशन है, क्या है, कैसे है, एंड डेली ये दोनों में से ही रहता है, तो उसके हिसाब से कर सकते हैं। हाउ टू चूज ए स्टॉक फ्रॉम इंट्राडे ब्रो। स्टॉक्स मतलब आप कौन सा स्टॉक्स की बात कर रहे हो, इन स्टॉक्स यू आर टॉकिंग, या फिर आप इन जनरल स्टॉक्स बात कर रहे हो, मतलब किसी भी मार्केट का हो गया, या फिर इंडेक्स पर्टिकुलरली, राइट। अगेन इन स्टॉक्स में थोड़ा इस पे क्लियर बताओ तो आगे डिस्कस करते हैं इस पे, ठीक है। तो अभी चलते हैं फिर से अगेन वापस बैक टू द क्विकली हम लोग एक ना मार्केट का रिकैप देख लेते हैं कि मार्केट में ओवरऑल हुआ क्या एंड कैसे वी कुड हैव ट्रेडेड। एक पर्टिकुलर मार्केट था जिसमें थोड़ा सा बुलिश दिख रहा था एंड अगेन आई मिस टू टेक द ट्रेड, तो वो भी मैं बताऊंगा कि क्यों ये एक्सपेंशन मेरे इसमें था कि प्राइस एक्सपैंड कर सकता है, बट लिटरली आई डिडंट टुक एनी एक्शन, तो उसके बेसिस पे भी था। गोल्ड पे भी देख सकते हैं, गोल्ड में बायस बुलिश है ना। अगेन यहाँ पे मुझे टोटल दिख रहा है, मेरा एंट्री बना, मैं प्लान कर लिया हूँ यहाँ से पर्टिकुलरली ये वाली जो ऑर्डर ब्लॉक है। लेट्स सी हाउ इट गोस। अगेन सेकेंड वीक क्या हम लोग ट्रेड करते हैं, राइट, अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट। अपना सिंपली क्या रहेगा, अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, करेक्ट। तो इस केस में क्या हो सकता है कि ये अगर मंथली प्रोस्पेक्टिव से देखो, एक मंथ का अगर ओवरऑल डेटा देखे, बिकॉज ये जस्ट अभी कुछ दिन पहले मंथ स्टार्ट हुआ, राइट, तो हम लोग अक्यूमुलेशन फेज में थे, करेक्ट। यही बताया था आपको कि थोड़ा सा कम एक्सपेक्ट करना। एंड अगेन सेकेंड रीजन था कि मार्केट में थोड़ा सा एक तरीके से लॉन्ग टर्म, पर्टिकुलरली डीएक्सवाई में एक लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी एरिया में पहुंचा था प्राइस, तो उसको लेने के बाद थोड़ा सा जनरली कभी भी मार्केट अगर किसी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के पास पहुंच जाता है तो वो थोड़ा सा आपको रुकते हुए दिखेगा। हाय ब्रो सौरभ राठौर भाई, हाय ब्रो, आई एम गुड, हाउ यू। सो उसके बेसिस पे भी वो थोड़ा सा मार्केट पॉज ले सकता था एंड अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी अगेन फर्स्ट वीक था तो हम लोग अक्यूमुलेशन फेज में थे। अब आता है सेकंड, क्या होता है कि मैनिपुलेट कर सकता है, बट अगेन यहाँ पे आप देखो तो उससे पहले ही मैं थोड़ा सा लुक अराउंड कर रहा हूँ कि एक एंट्री बनाया हूँ अगेन बेस्ड ऑन दिस कि कंप्लीट वीक मार्केट वाज ऑन accumulation एंड ये प्रीवियस लिक्विडिटी पूल। देखो इसके पीछे का लॉजिक क्या था ना कि ये जो आपका मैनिपुलेशन यहाँ पे हो रखा है ये वाली ये इस लेग के बाद थोड़ा सा एक्सपेंशन पेंडिंग था, तो उसी के हिसाब से इसको थोड़ा कंटिन्यू करते हुए एक ले लिया हूँ। बट अगेन हाउ इट गोस मुझे नहीं पता है, मैंने मेरा एंट्री बन चुका है इस ऑर्डर ब्लॉक से, सो लेट्स सी कि हाउ इट गोस। एंड पर्टिकुलरली मेरा टारगेट ये वाला हाई है एंड उसके बाद ये वाली हाई के अराउंड लुक अराउंड कर सकते हैं। तो अभी तो गोल्ड का सिंपल सा है एंड जो लोग सीआरटी वगैरह ट्रेड करते हैं, ठीक है, जो लोग सीआरटी वगैरह ट्रेड करते हैं, लेट मी डू वन थिंग, लेट मी रिमूव ऑल ऑफ दिस ड्राइंग। जो सीआरटी वगैरह ट्रेड करते हो डेली में एक रिजेक्शन है आना, बट प्रॉब्लम क्या है ना यहाँ पे आप अगर गोल्ड को देखो तो लास्ट कपल ऑफ डेज से प्राइस इज रिजेक्टिंग लोस, रिजेक्टिंग हाइस, रिजेक्टिंग लोस, रिजेक्टिंग हाइस, तो ऐसे ही मतलब एक तरीका से बोल सकते हो कि मार्केट थोड़ा सा सीक एंड डिस्ट्रॉय या फिर मतलब दोनों साइड को ले रहा है, ठीक है, तो उस फेज में था। बट यहाँ पे अगेन ये थोड़ा सा अर्ली डेटा हो सकता है, इसको मैं पर्टिकुलरली मान के चल रहा हूँ कि ये हो चुका है। आई मीन जो मैनिपुलेशन होना था यहाँ पे हो गया है, मे बी प्राइस थोड़ा सा बुलिश हो ये वाली हाइस के अराउंड एंड उसके बाद पर्टिकुलरली टुवर्ड्स दिस हाइस, तो यही दो एरिया है जो अभी लुक अराउंड कर रहा हूँ गोल्ड में, सो दैट देखते हैं क्या होता है आगे, ठीक है। ये वाली दोनों एरिया आई मीन ये हाई बोल सकते हो या फिर ये वाला ज़्यादा बेटर रहेगा जो अभी है, बट ओवरऑल यहाँ तक जाने का है, ठीक है। तो जैसा जाता है लेट्स सी कि कैसा, गोल्ड में ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे हिसाब से। आते हैं डीएक्सवाई पे, ठीक है।
DXY थोड़ा सा अब ना आई वुड से कि मार्केट अगर थोड़ा सा आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मंथली में देखो, मंथली में क्या दिख रहा है, ये थोड़ा सा एक हाई, ओल्ड हाई जो था यहाँ से प्राइस रिजेक्ट किया है, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस हाई एंड अगेन आप ही हाई ले सकते हो कि ये है, बट प्राइस में ओवरऑल लॉन्ग टर्म हाई एंड लो लेता हूँ, एग्जांपल ये लॉन्ग टर्म लो हो गया एंड ये हो गया, इसके बीच में ही ये प्राइस एक्शन है, तो फॉर मी आप पूछोगे रेंज क्या है, तो फॉर मी रेंज ये वाला एरिया हो रहा है, ये है, और यहाँ से प्राइस रिजेक्ट किया है, व्हेन प्राइस इज रिजेक्टिंग द हाइस हम लोग लोस की तरफ लुक अराउंड करते हैं, इफ नॉट लोस देन फर्स्ट आइडियली क्या होता है कि 50% के एरिया को लुक अराउंड कर सकते हैं, तो उस बेसिस पे भी अगर आप देखो तो यहाँ पे बहुत ही मार्केट थोड़ा सा हिंट दे रहा है कि मार्केट थोड़ा सा पुल डाउन कर सकता है, मतलब पुल बैक आ सकता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ही चीज़ें प्लान करते हैं, और एक बार ना 12 मंथ्स भी देख लेता हूँ कि कुछ है क्या, आई मीन 12 मिनट प्रेस हो गया, मेरा ट्रेडिंग व्यू एक्सपायर्ड है, तो आई एम नॉट एबल टू सी दैट थिंग्स। यहाँ पे क्या दिख रहा है ना कि एक चीज देखो, इसको हटा रहा हूँ फिर से, ये बहुत ही ओल्ड है, ये समवेयर अराउंड 2017 का है, प्राइस इसको लेने के बाद रिजेक्ट किया है, रिजेक्ट के बाद नेक्स्ट कैंडल भी इसके नीचे में क्लोज किया है, और अभी 23 डेज इज पेंडिंग, तो जब तक ये कैंडल खत्म नहीं होता, आई मीन प्रिंट हो नहीं जाता, तब तक हम लोग को वेट करना चाहिए, बट अर्ली इंडिकेशन है कि मार्केट में ये जो था प्रीवियस डे या फिर आई मीन प्रीवियस हाई को लेके एंड नीचे की तरफ प्राइस आ सकता है, एंड ये फेयर वैल्यू गैप एरिया होगा जो लेक अराउंड कर सकते हैं पर्टिकुलरली, तो अगर आप ये देखो तो समवेयर अराउंड 99 के आ रहा है, तो अगर उसको इस चार्ट में देखो तो ये वाली लो हो रहा है, तो दैट सेज कि अगेन मार्केट ये ईयरली फेयर वैल्यू गैप है, तो यहाँ से ये रिजेक्ट किया है, तो रिजेक्ट करने के बाद नेक्स्ट एरिया अपने पास यही आता है, एंड सेकंड थिंग है ये प्राइस ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद नीचे आया, ठीक है, नीचे आने के बाद फेयर वैल्यू गैप, यहाँ से ये जो पोस्ट ब्रेकआउट रीटेस्ट हुआ एंड प्राइस ऊपर गया बट फेल टू गो अबव दी साइज, थोड़ा सा अगेन पुल बैक आया एंड पुल बैक आने के बाद थोड़ा सा फिर रिट्रेसमेंट, फिर अगेन, बट काइंड ऑफ मार्केट ना ऊपर और नीचे के बीच में अटका है, बट फेवरिंग साइड मेरा रहेगा कि थोड़ा सा नीचे जो कि ये लो है इस साइड टिल्ट हो सकते हैं, बट कितना लंबा ये कंसोलिडेशन चलेगा आई आई डोंट से, ठीक है, और यहाँ से भी देखो अगर वीकली में आते हो तो वीकली में चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी या फिर आप जो भी बोलो वैसा दिख रहा है, बट मेरा प्रेफर्ड क्या रहना है, अगर ये मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आना शुरू करता है, फॉर एग्जांपल ये जो फेयर वैल्यू गैप है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके नीचे में क्लोजिंग दे एंड स्लोली वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट करे, तो दैट विल बी द बेटर आइडिया फॉर मी, तो अभी के लिए तो थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है अगेन ये वाली एरियाज में, सो लेट्स सी कि हाउ इट गोस, ठीक है, ओवरऑल यही है कि बेयरिश है, अगर डेली में आते हैं तो डेली में मेरा क्या था ना, सिंपल था कि अगर ब्रोकर के बारे में भी बताना सर फॉरेक्स के लिए, हाँ ठीक है बताता हूँ आगे, ठीक है, मेरा अभी क्या था ना कि प्राइस अगर ये वाली हाई को लेके आता है ना, अगेन ये रिजेक्ट किया है, राइट, ये रिजेक्ट किया है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ आ सकता है, करेक्ट, मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ आ सकता है, तो मेरे केस में क्या रहेगा ना कि ऐसा अगर कुछ होता है, फॉर एग्जांपल ये तो बताया था जैसे एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन ऊपर की तरफ करे, अगेन की लेवल में ये ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक पे आए प्राइस एंड उसके बाद अगर रिजेक्शन दिखता है, अगर रिजेक्शन दिखता है तो दैट कंफर्म्स द आइडिया कि प्राइस लोअर लो फॉर्म करने जा रहा है, राइट, प्राइस लोअर लो फॉर्म करने जा रहा है, और वी कैन लुक फॉर दैट एंड अगेन फिर स्ट्रक्चर नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है,
तो ओवरऑल यही आइडिया रहेगा कि थोड़ा सा बुलिशनेस देख सकते हैं जब इस हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है, ठीक है। तो एक और चीज है ना, मार्केट कभी इक्वल हाइस ऐसे नहीं छोड़ के आता है। फॉर एग्जांपल देखो, एसएमटी भी नहीं है कहीं पे, यहाँ पे भी देखो तो मार्केट में ये जो मंडे का लो है, अगर डीएक्सवाई देखिए ये मंडे का हाई था, राइट। यहाँ पे यूरो में देखो तो डीएक्सवाई में आई मीन मंडे का लो है, एंड जीयू में भी मंडे का लो है। देख रहे हो कहीं पे भी एसएमटी नहीं है। तो ये तो थोड़ा सा इंडिकेशन आ रहा है कि मार्केट थोड़ा सा पुल बैक आएगा, ठीक है, पुल बैक आएगा। एंड कैसे आता है वो प्लान करना होगा, उसी के बेसिस पे ये देख रहा हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा जब ये रिजेक्ट किया है तो हम लोग ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि समवेयर अराउंड, आज कितना है आप 6 है ना, आई मीन सॉरी आज तो 8 हो गया, तो 9th 10th 11th तक एक आधा कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे या फिर वेनेसडे को। अगेन इकोनॉमिक कैलेंडर में एफओएमसी है नेक्स्ट वीक, एक बार देख लेता हूँ फिर से कंफर्म करने के लिए, सो दैट एक मिनट देना। हाँ ठीक है, करेक्ट। सो वेनेसडे 11 राइट, सीपीआई है, माय मिस्टेक, एफओएमसी बोला बट सीपीआई है, राइट। एक मैं 11th of December, करेक्ट, हाँ सीपीआई है। तो 11th तक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट मैनिपुलेट कर ले, मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे होगा। तो उस केस में आप क्या देख सकते हैं कि कल एंड परसों एक्सपेक्ट्स हायर प्राइसेस ऊपर की तरफ, एंड उसके बाद फिर नीचे की तरफ एक अच्छा सा दिख सकता है। बट कंसर्निंग क्या है ना यहाँ पे कि गोल्ड ना रजिस्ट कर रहा है ये वाले, जब ये जो लोग सीआरडी ट्रेड करते हैं उनका तो एंट्री यहीं से बना होगा। बट फॉर मी, मैं यहाँ वाले इस वाले एरिया के बाद जो कंफर्मेशन है उस पर लिया हूँ, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे एंट्री लेने का कोई सेंस था नहीं लॉन्ग का, बिकॉज ये अगर आप देखो तो मार्केट उस फेज में था नहीं, बट फर्स्ट वीक चल रहा था तो यहाँ पे भी एंट्री बन नहीं रहा था। बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये लास्ट डे हो रहा है एंड अर्ली मार्केट में थोड़ा सा हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि कब हमेशा सेकेंड वीक में ही लो या फिर हाई फॉर्म होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस बेसिस को देखते हुए एंड अगेन यहाँ से रिजेक्ट कर रहा है प्राइस बार बार, जब भी प्राइस इस वाले एरिया में आ रहा है तो बार बार रिजेक्ट कर रहा है। तो उन सारे को मिला के गोल्ड को उसलिए बुलिश ले लिया हूँ, बट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आएगा, एंड रिट्रेसमेंट ये वाली लो के अराउंड तक कर रहे हैं, ठीक है। अगेन इसके बाद कैसे होगा, जब प्राइस एक बार आता है तो विल लुक इनटू दैट। ये वाली जब हाई रिजेक्ट किया है तो इसके बाद बोल रहा हूँ, ठीक है। डेली टू 1 आवर आ सकते हैं आप, एंड 1 आवर में ये वाली लो है, ठीक है। ये वाली की लेवल से आप कुछ रेंजेस वगैरह दिखे तो शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे कि अब यहाँ से कैसे प्लान कर सकते हैं। अगर आपका ड्रॉ लिक्विडिटी ये लो है तो सिंपल एज दैट कि हम लोग कैसे कुछ कर सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा एक रेंज फॉर्म हो, जब भी रेंज ले तो समथिंग ऐसे ऐसे प्लान करके नीचे की तरफ हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेस 100 का कोई अभी ट्रेड नहीं करने, ऑल टाइम हाई पर है। ठीक है, मैं बताता हूँ आगे, समझे। अभिषेक भाई है, राइट, आई एम नॉट रॉन्ग, देन आप कंफर्म करना, आप अभिषेक भाई हो ना। सो मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। तो ऐसे कुछ प्लान कर सकते हैं, तो लेट अस सी कि कैसे होता है। अगेन इसके नीचे जाए या नहीं जाए वो डिफरेंट थिंग है। अगेन मार्केट जब ये दिसंबर के लो को लेता है तो हम लोग देख सकते हैं, अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाली एरिया से प्राइस ऊपर की तरफ अगर जाता है तो कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। सो दैट विल बी द पॉइंट इन यूरो, ठीक है। कमिंग बैक टू द अगेन एक और चीज दिखाता हूँ। मेरा क्या है ना कि चीजों को छोटे लेवल पे भी रिजेक्शन में प्रेफर करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आप हाई देखो ना, तो ये क्लोज दिया है इसके हाई के ऊपर में, इसके ऊपर में क्लोजिंग देने के बाद ये हाई ना रिजेक्ट किए बिना आ रहा है, रिटेस्ट नहीं हुआ ये हाई। तो मार्केट अगर नीचे आता है तो दैट विल ऑल्सो से कि मार्केट ये हाई को टेस्ट करने तो आएगा ना, क्योंकि व्हाट मेक्स दैट हाई कि ये सही में रिटेस्टेड है या नहीं है। अगेन बहुत ही
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टाइप से बात कर रहा हूँ, बट ये चीज़ें होती है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। सो अगर ये हाई रिजेक्ट करके आ रहा होता ना, मतलब रीटेस्ट करके आ रहा होता, तो फिर चीज़ें अलग हो सकती थी। हाँ ठीक है, प्राइस नीचे 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 जा सकता है, बट अगर ये डायरेक्ट स्ट्रेट अवे नीचे आता है ना, तो उस केस में भी ओवरऑल हम लोग बुलिश देख रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मंथली थिंग भी बुलिश बताएगा अगर एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन देखे तो। बट अगर वैसे कुछ होती है तो हम लोग लुक अराउंड करेंगे। ठीक है, जीबीपी का भी वही सेम हाल है। एंड अगर आप पूछोगे ईयू एंड जीयू में कौन सा प्रेफर करूं, तो उसका आप यहाँ से एनालिसिस देख सकते हो। एंड मुझे पर्टिकुलरली अभी भी यूरो ज़्यादा बेयरिश लग रहा है, तो अपना बेयरिश का प्लान है ट्रेड का, तो आई प्रेफर कि यूरो को ट्रेड करूं। बट अगेन मार्केट का डेटा चेंज होता है तो आपको चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल ईयू एंड जीयू का जो क्रॉस पेयर है, उसमें मेरा जो ड्रॉ है इस वाले एरिया के आसपास में है। उस लास्ट टाइम जब आपसे बात किया था तो ये फेयर वैल्यू गैप से प्राइस नीचे की तरफ आया, सो दैट आप देख सकते हो कि कंपैरेटिवली मार्केट वीक था, राइट। लास्ट वीक बोला था अगर लॉन्ग करना हो तो आप जीयू को लॉन्ग करो इंस्टेड ऑफ ईयू, राइट, बताया था, आप लोग जाके वीडियो चेक कर लेना। बट यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक था, राइट, कि ईयू क्यों बेयरिश था, आई मीन वीकर था कंपेयर टू द जीयू, बिकॉज ऑफ दिस चार्ट। तो यहाँ पे अभी भी मैं थोड़ा सा ये रख रहा हूँ कि मार्केट इस वाले एरिया को विजिट कर सकता है, तो इसीलिए प्रेफर्ड रहेगा ईयू कंपेयर टू जीयू, क्योंकि हम लोग शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर रहे हैं, राइट। अगर लॉन्ग का प्लान कर रहे होते तो फिर जीबीपी ज्यादा अच्छा होता। आते हैं यूएसडी कैड पे। कैड ओवरऑल देखो, मार्केट अगर डॉलर बियरिश होता है तो ये भी बियरिश होना चाहिए, बट क्या दिख रहा है यहाँ पे कि प्राइस ऊपर की तरफ पुश किया, ये वाली हाई को लेके रिजेक्ट किया, और अगर मार्केट ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट क्लोजिंग दे रखा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इससे ना, अब पर्टिकुलरली फॉर सम टाइम एटलीस्ट जब तक ये वाली एरिया क्लियर नहीं होती है कि मार्केट क्या बोल रहा है, फॉर एग्जांपल ये हाई जो है जो एक रेंज फॉर्म हो चुका है, तो एक्सपांसन को हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, एक्सपांसन फेज में हम लोग एंटर करेंगे, इंटरेस्टेड होंगे। तो इस केस में अगर आप देखो तो मार्केट जब तक इन दोनों एरिया के बीच में, पर्टिकुलरली आई अवॉइड कि ट्रेड करो इस वाले पेयर में। सेम अप्लाइज टू द बीटीसी एंड बीटीसी वीकली तो ठीक दिख रहा है। ठीक है, आई मीन प्राइस इसके ऊपर में अभी 10 घंटा बचा है, बट स्टिल ठीक है, स्टिल अगर ये अगेन कल ओपनिंग प्राइस से पहले अगर ये रिजेक्ट कर देता है तो फिर इट विल बी बेयरिश। बट अभी गिवन सिचुएशन की जो अभी दिख रहा है अपने पास, ठीक है, जो अपने पास दिख रहा है उसके बेसिस पे अगर आप बात करो तो प्राइसेस वीकली में तो ठीक दिख रहा है, बट वही आप 4H या फिर वनडे में आते हो तो चीजें थोड़ा सा चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये वाली हाई तो ले लिया मार्केट, राइट, उसके बाद फिर ये लो लिया, तो लो के हिसाब से फिर प्राइस को ऊपर हाई तक आना चाहिए, रीटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये मार्केट रीटेस्ट अभी तक नहीं किया, इवन इन 4H रीटेस्टेड नहीं है, इवन इफ यू टेक इट 1H का हाई है तो रीटेस्ट बनता है मार्केट का। तो मार्केट इस वाले हाई को या तो रीटेस्ट करे या फिर एसएमटी हो, दोनों में से एक एक्सेप्टेबल हो जाता है। तो उस बेसिस पे अगर देखा जाए तो मार्केट तो ऊपर की तरफ ही दिख रहा है। ठीक है, ये वाली हाई को लेके ब्रेक किया, उसके बाद ये एक तरीका से टर्टल सूप था, बट कब था ये आपका 5 दिसंबर को ही था, तो थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकता है, प्राइस विल शो कि हाँ मैनिपुलेशन हो चुका है, बट ऐसा ना हो। तो लेट अस सी एंड वेट एंड वॉच कि जब तक प्राइस इस एरिया में है ना, तो छोटा ट्रेड प्लान करो, छोटा इन द सेंस सेशन ट्रेड। फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म के ऊपर मत देखो कि हाँ नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। हाँ, इस वाले स्ट्रक्चर में अगर कुछ दिखता है या फिर विद इन छोटा सा जो स्ट्रक्चर है ना 4H एंड 1H का, इसमें अगर कुछ दिख रहा है प्लान करो, बट डेली का स्ट्रक्चर या फिर वीकली का स्ट्रक्चर को छोड़ दो अभी, जब तक मार्केट आपको क्लैरिटी नहीं देता है कि अब ऊपर की तरफ। मान लो फॉर एग्जांपल
अभी ऐसे क्लोज होता है तो दैट सेज कि वीकली क्लोजिंग दिया है ऊपर में, तो मार्केट ऊपर की तरफ पुश कर सकता है, तो उस केस में आप अगेन प्लान कर सकते हो। बट अगर क्या होता है कि मार्केट रिजेक्ट करता है, तो उस केस में वेट करो कि प्राइस इस एरिया को क्लोज करे, एंड क्लोज करने के बाद फिर ऊपर की तरफ टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर वो फेल करता है बार बार लेने में ये वाली हाई को, तो दैट विल बी द अगेन द सिचुएशन कि वहां पे आप चीजों को डिफरेंटली देख सकते हो। कमिंग टू द ईएस, इसका ना मैं क्या करूँ, दिसंबर का ही कॉन्ट्रैक्ट लेना है। ठीक है, एंड दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट में आप भी चेकआउट कर सकते हो। एंड अभिषेक भाई बोले कि डोंट टच द एनएस, राइट, या फिर पर्टिकुलरली ईएस भी देखा जाए तो नहीं, ऐसा नहीं है कि जब मार्केट बुलिश है तो लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी मिले तो लेना चाहिए, until unless there is a clarity, राइट, कि मार्केट बेयरिश हो गया या फिर कुछ वैसा है। तो अब क्या कर सकते हैं, जैसे ये वीकली है, राइट, अब वीकली एरिया में हम लोग वेट कर सकते हैं कि अगर ये फेयर वैल्यू गैप है, पर्टिकुलरली ये वाला बोल रहा हूँ, जैसे अगर मान लो मार्केट बुलिश चल रहा है तो बुलिश के साइड का ही ट्रेड देख सकते हैं। तो जब इस वाले एरिया में प्राइस आए, ठीक है, विच इज अगेन ये ऑर्डर ब्लॉक के साथ अलाइन हो रहा है, ये वाली एरिया जो देख रहे हो ये ऑर्डर ब्लॉक के साथ अलाइन हो रहा है, तो इस वाले एरिया से आप एज अ इसको अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे प्लान कर सकते हैं। उसी को आप अगर डेली में देख रहे हो तो डेली भी अगेन सजेस्टिंग दैट ओनली। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक रिजेक्शन दिख रहा है, तो थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट में एक पुल बैक आ सकता है फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, मे बी फॉर अ डे और टू। ठीक है, इस वाले एरिया की तरफ, एंड उसके बाद फिर ऊपर की तरफ हम लोग लुक अराउंड कर सकते हैं। बट क्या अगर अगेन आई कैन अंडरस्टैंड कि उनका कंसर्न है कि ऑल टाइम हाई पे क्या पता रिवर्सल हो जाए, रिवर्सल कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इसमें आप ना इनवैलिडेशन का एरिया एक एंटर करो। इनवैलिडेशन का एरिया क्या हो गया कि पॉइंट वन है कि मार्केट पहले डेली में इसके नीचे क्लोजिंग ना दे। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो कौन सा स्विंग लो है, एक ये कैंडल और ये कैंडल को पकड़ो, तो मार्केट इस वाले के नीचे अगर क्लोजिंग नहीं देता है तो आप बुलिश प्लान कर सकते हो। तब तक आप कॉन्फिडेंट रहो कि मार्केट बुलिश है, सिंपल एज दैट। एंड अगेन अगर स्ट्रक्चर वाइज भी देखो तो इंडेक्स हमेशा हायर हाई फॉर्म करते जाता है, राइट। अगर फॉर एग्जांपल प्रीवियस रिकॉर्ड्स देखो, हायर हाई फॉर्म करते जा रहा है, तो डोंट ट्राई टू गेस द टॉप्स एंड बॉटम्स ऑफ द प्राइस, जो दिखता है वो ट्रेड करते हैं, एंड उसी के बेसिस पे ऐसा कुछ हम लोग देख सकते हैं, राइट, कि ये अलाइन हो रहा है। नीचे में अगर क्लोजिंग दे देता है तो दैट सेज कि मार्केट इज स्लाइटली कंसर्निंग, एंड हम लोग लोअर लेवल्स, फॉर एग्जांपल ये वाली लोस अगर इसके नीचे भी क्लोज करता है तो फिर ये वाली लोस ऐसे कुछ कर सकते हैं। बट एज लॉन्ग एज मार्केट इज गोइंग हायर, अप्लाई द कॉन्सेप्ट एंड लेट अस गो विद दैट कॉन्सेप्ट, सिंपल एज दैट। अगेन यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक अलाइन हो रहा है तो इसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं चीज़ों को। कैसे, जैसे यहाँ पे ऊपर की तरफ गया और ट्रेस किया, राइट। अगेन ये देखो कब हो रहा है, 15th ऑफ नवंबर के अप्रॉक्स हो रहा है, 15 to 18th ऑफ नवंबर, मिड ऑफ द मंथ। अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ तक हुआ, ऊपर की तरफ हुआ। ये अक्यूमुलेशन कुछ ऐसा बोल सकते हो, अगेन बोल सकते हो मार्केट तो यहीं से स्टार्ट हुआ ना, राइट, ऊपर की तरफ एक्सपेंशन, आई अग्री। बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखो, मार्केट थोड़ा सा लेट अक्यूमुलेट किया, राइट। अगेन एक्सपेंशन फेज के बाद अक्यूमुलेट किया, मैनिपुलेट किया मिड ऑफ द मंथ, एंड देन तो आपको या तो ये करना है, या तो ये वाली एरिया जब पता हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है तो थोड़ा सा पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हो, नीचे की तरफ देखो। बट प्रेफर्ड ये रहेगा कि ऐसा एरिया से लॉन्ग करो एंड टारगेट द हाइस। ठीक है, अगेन यूएस 100 पे आते हैं। यूएस 100 थोड़ा बुलिश दिख रहा है, एंड वीकली में अच्छा एक्सपेंशन आया है। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है ना, जनरली क्या होता है, मार्केट जब इतना एक्सपैंड करता है ना, तो कभी कभी ना जनरली मार्केट इस वाले हाई को लेके नीचे की तरफ, जैसे ऊपर ये देखो, ये इंडिकेट क्या कर रहा था, यहाँ से डेली में रिजेक्शन आ रहा है, मतलब बियरिश दिख रहा है, वेरएस यहाँ पे नहीं दिख रहा है, राइट। तो इस वाले केसेस में क्या हो सकता है ना कि ये वाली देखो, इस वाले में जब मार्केट इसके ऊपर में जाए ना, तो थोड़ा सा पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ इधर से आ सकता है,
एंड कंडीशन क्या है कि नीचे आने से पहले ये ऊपर जाके रिजेक्ट करे एंड देन नीचे की तरफ आए तो ठीक है, अदरवाइज अगर इसके ऊपर में क्लोजिंग देता है तो अगेन कंटिन्यूएशन ही शो करेगा, तो उस केस में भी आप ऊपर की तरफ ही देखोगे। अगर ऊपर की तरफ वो क्लोज नहीं दे रहा है, 1 मिनट देना, एक कॉल आ रहा है, ठीक है। तो देख लो ऐसा ही है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप US 30 का पूछोगे तो US 30 अगेन यहाँ पे एक SMT था एंड ये आप अगर देखो ना, ये वाली एरिया देखो, यहाँ से जब रिजेक्ट किया था तो यहाँ से रिजेक्शन के बाद ऊपर की तरफ कंटिन्यू हो सकता था। सो ठीक है, अभी लेट अस अगेन सी द US 30, ठीक है। ये वाला एरिया डॉक्टर मैट्रिक्स, हाय सर, सुप मास्ट मास्टर अन्ना, व्हाट इज दिस अन्ना? सो US 30 अगेन आप अगर देखो तो मोर और लेस ये अगेन दिस इज व्हाट इट इज। सॉरी, मंथली भी कार खुल गई। यहाँ से ये देखो अगेन एक चीज देख रहे हो कैसे एक्सपैंड किया ये लो के नीचे से, तो ये अगेन एक अच्छा एरिया है। ऐसे ही हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। चीजों को हम लोग ऐसे ही प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट पेयर्स वगैरह देख सकते हो। इसको देख रहा था, यहाँ से एक ट्रेड था बट हुआ नहीं, तो बट अगेन ये यहाँ पे है, ये वाली एरिया से मेरा ट्रेड था, तो यहाँ से देखा था एक, बट एंट्री बना नहीं, मतलब थोड़ा सा छूट गया। भाई आप एक बार ये सीधी हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन कैसे मार्क करते हो, इसका सेटिंग क्या है एक बार बता। एग्जैक्ट मतलब सिर्फ प्रेस करो ना, फॉर एग्जांपल जैसे ये है ना, ये सेलेक्ट करने के बाद ये दबाया एक और, उसके बाद सिर्फ दबा लो, ये देखो सीधा भागेगा, सीधा।
या फिर मोबाइल में हो तो वहां पे ना एक ये आता है, आई मीन एक नहीं मतलब ट्रेन लाइन ड्रॉ कर लो। मोबाइल में क्या है कि मोबाइल में ऐसे ड्रॉ कर लो, टेढ़ा हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। जो सेटिंग का आइकन ये छोटा वाला आता है ना, उसमें एक आइकन आएगा ऐसा कुछ करके होगा, आई डोंट नो कि उसको क्या बोलते हैं, मतलब ट्रायंगल टाइप का रहता है, ऐसा कुछ है। ये ऐसा है क्या आइकन है, उस पर क्लिक करोगे ना तो अपने आप ये सीधा हो जाएगा फिर। एंड सीधा इस वाले पॉइंट से होगा, ये याद रखना, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसके सीधा हो जाएगा। संपत, हाय। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स चला गया वो नहीं है इधर वही उसी का कॉल था, वो कॉल किया, बोला लाइव में है, वो बोला ठीक है लाइव करो हम जा रहे हैं वो इधर आके कमेंट करके चला गया। हाय मात्रो, आई थिंक वो मैट्रिक्स ना लिंक पोस्ट किया सबको ही आए। ठीक है, एनीवे तो ये था ओवरऑल अपना प्री मार्केट, जो भी बोलो। अगर कोई स्पेसिफिक पेयर है, हाँ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ना उधर लिंक डाला है, ठीक है, आई गेट इट। सॉरी गाइस, सो हियर आई विल बी टॉकिंग इन हिंदी ओनली बिकॉज इट्स मोर ऑफ हिंदी ऑडियंस, सो दैट इज व्हाई। अगर इफ माय गॉड 20 so ICM army is here, I see that. Anyway, let us back to the topic. If you guys have any questions या फिर आप लोगों का है कुछ तो। True followers, हाँ हाँ I do follow okay, ICM I see guys. So किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो, so that अगर आप लोगों का कुछ हो। लव फ्रॉम मैट्रिक्स फैमिली, लव यू टू फ्रॉम ट्रेड ओपिनियन फैमिली एंड मी। Are you Mick? No, I am not Mick. Please talk in English only. Okay, for let us. If you guys have something for few questions, we'll take it from the chat, because I know that Matrix has pasted the link in his Discord, so people has come from there also. So let them also understand. So you can ask that. If you guys have any questions, you can ask in the chat so that I'll answer that. I was just going through the pre-market analysis. We have talked for almost all the forex major pairs, index and gold. So if you guys have any questions, you can ask from that. Brunei also trade op, bro. I now also finish family. Okay, thanks for being a trade opinion family. So this is what I'll be looking into the DXY, particularly about after this structure shift. I'm looking for slightly bullish momentum. So opposite to this goes to the DXY, and again towards these lows only, not for the long terms, not to below those things. And in gold, I'm already long from here, from particularly this order block. Let's see how it goes. Considering the it's a first week only. When I planned for the entry, it was the first week only. But then also I have considered taking long from here because of certain these rules, and particularly from rejection from this area, and failing to close below these lows. Market is resisting below these lows, so that is why. Okay, Nifty, I think somebody asked me on that time. Let us go to the Nifty also. And one thing I'll quickly show you. If you see the Nifty, particularly many says that it don't work at all. And I slightly disagree with these things, that it don't work. And every concept works in all kind of markets. And here particularly if you see it, starting from the weekly perspective, and see it here. For example, this was the accumulation, first 2 weeks, manipulation and distribution, right? So if you see the monthly area also into the Nifty, market is following same kind of thing. Again, if you go to the
lower levels also you can find it happening again and again and again, and these are the things which you can quickly see that how well market is following those. For example, you see it, I'll be giving you a few examples here, and from the recent price action, let us start from maybe from this structure. So what do we had? Market came, and this was the monthly turtle soup. You can see it if market is bullish, so somewhere around second week and week, second mid phase of the month, you can expect accumulation and to manipulation to happen. Okay, so after manipulation, market has expanded, and after expansion again, market you see accumulation, manipulation, retested this area, particularly the gap, and again started expanding higher once there was CST and all those things. So you can see that market is very well respecting these areas, and again and again it is following. You see here, these are the areas which is very prominent. You see that once the highs are broken, it is getting retested, and market. Can you predict on a US oil? Okay, US oil I haven't seen. I'll quickly look into that. Give me 1 second. So if you see it from the perspective of Nifty, also the turtle soup, and why I say turtle soup, because I trade turtle soup only. So turtle soup in general, it works very flawlessly, and it works in all sort of market. Those who trades market maker also can plan from the same thing, but here it works in sort. US oil. Okay, so market rejected. So you see, for example, we had a sort of down movement. There was a retracement, and again price came to. See, I do very basic things. For example, here you see that price is respecting the bearish PD area, and it is well respecting it. Failing to close above these areas, so that says market is bearish. Pro, why subtitle not available? Hi Dinesh, how are you? Matrix again, you came. Where you went? And why you posted the link there? See, all don't know Hindi, and they will be scolding you only that you sent the link. I came here, and this guy is talking in the. So if you see here, for example, price came to the order block and rejected from this area, and again we see that there is a momentum towards downside. Again, price came and tested the order block, and again it rejected this particular high. So CRT trader or a range trader or whatever you call yourself, you see it here. For example, price, this was rejected at a key level. So technically price is bearish, right, in a monthly towards these lows. So the perspective will be very simple, that draw is very clear here, right? We are looking for the price to come toward these areas. So now let us go to the weekly and see, do we have anything to look here for weekly? And in weekly also, price opened and went up, and again sort of not made any concrete here. So let us see something we have in daily, and then we'll look into that. And from daily we can see that there is a confirmation of the order block, so we can look for the short opportunity if we find something, for example, taking this area as the thing, so we can look for the down from the order block. So this is what will be the US oil. English everybody knows. I know that English everybody knows. That is why I'm speaking English, because all member has come from. I was doing the live in Hindi only. Uncle came, bro. Okay. I mean, your uncle came, or you are telling uncle came, bro? By the way, how is my stream quality?
So anything apart from this, or shall I continue the things which I was doing it? Nice, nice. Okay. Euro USD outlook, bro. That is what in Euro USD. If you see it now, overall perspective is somewhat bullish, and that also came from the DXY. See, again, I started the analysis from the 12 month, and if you see in the 12 months, price has rejected these highs, right? Particularly the 2017 highs was rejected, and after rejection, the last year, I mean January, was bearish. Will you consider Bonda as well? Bonda, bro, Bond or Bonda? Bonda, that Muttu Bonda. Okay, so if you see that a price particularly rejected these highs and after that it closed. So as a range trader, we will be looking bearish, right? But you see that price the entire year has gone higher, right? Just now I spoke about the US oil, bro. So from this again, there is 23 days which is left. So I'm not sure about that, but looking like a market can go bearish. Okay, and same thing is getting somewhere translated into the monthly perspective also, that last month when price reached to the old high, okay, when last month price reached to these highs, it has rejected these areas. So that again says that market can be bearish. How far it can be bearish? So we can look for these particular fair value gaps. And again in monthly also there is a fair value gap. So even if price rejects these highs, then but condition is that 23 days is left. Last minute, if something changes, that goes different, right? Again, we'll have different analysis, but based on the given price data, if some that thing goes the way which we are looking, then we can look for this 100 area, that dollar is coming somewhere around 99 and 100. And those who don't know that, I look for longs from here on itself. The October 3rd or 4th, I told that dollar I'm looking for bullish toward this highs, and that has to a tick. So again, same thing I'm trying to applying here, and with that idea, first area which I'll be looking is this fair value gap. But how it goes, that we have to see it. And again, in weekly perspective, if you see it, it has rejected these highs. There is a change in the state of delivery. So I am looking at this as a range, right? This as a range of starting week. So what I'm looking is price can go higher, take out the week high at a key level, which is your order block, and then it can come down, right? And the same thing which I see it here. So price rejected these lows, and there is equal highs, and there is no SMT at all, right? Even if you see the euro, price has failed to take these lows. Same case goes with the geo. So dollar is slightly looking that price is coming towards the higher side. Again, if it is breaking these highs, then we'll change our overall perspective. But as of now, what I'm looking is for the first 2 days, like Monday and Tuesday. Wednesday we are having CPI. So considering that fact, we can see that price is coming toward these highs, and again at a key level. So if something happens like now, what I'll be looking is, if we look at a monthly perspective, this will be our accumulation, then manipulation, again these highs at a key level, and then we'll be looking for the lower expansion. But condition is how price is rejecting from these highs, because we see the early indication that price has rejected these lows. So we will be looking toward these highs. Once if price reaches to those areas, so we'll be looking at. So for this particular week, I am bullish plus bearish both. First, I'll be interested for the bullish side. Once price reaches to these areas, then we can see that how it is responding from that area. So if we are bullish in DXY for shorter period of time, then we can look for the
opportunity to sell in the euro. That is what I'll be saying it. Price rejected these highs, and there is a key level. So if some range is forming, that is what I have drawn here, right? So you see it here. So if price range then manipulates into the key level, then we'll be looking for some turtle soup here, and we can look for the sorting opportunity targeting towards these lows. Once the price reaches toward these lows, then again we'll reevaluate, and then based on the closing of the daily candle, once price reaches these areas, then we can look for the trades. So this is about euro outlook. US, well, bro, I just told it once again. I'll repeat it. Looking bearish only toward these lows. You see here, I'm talking about these lows. So price is looking bearish. The moment price rejected from these highs. What about Nasdaq? Yeah, okay, I'll come to Nasdaq. So I'm looking toward these lows. Bro, how is it possible? DXY and Euro USD also we are experiencing. No, no, I didn't say DXY bearish. I said DXY bullish first, and then bearish. Euro bearish first, then bullish. I'm talking against each other only, not together. For short period of time, for a coming Monday, Tuesday till Wednesday, I'm expecting price slightly higher, and then condition is if price closes above those highs, then we may continue. But if fails, then we'll you know drop down into the dollar, and we'll go for long into the euro. That is after Wednesday, that CPI. But before that, I'm expecting bullish dollar and bearish euro. Coming to the NAS, okay. Particularly just now I was talking here that once market is bullish, and if it is going higher and higher, in that case, by any chance, don't try. Who's follows my day? Okay, or no, I understand. DXY is first. Take BSL after very successfully. I'm correct. Correct. Yeah. That is it. When price is taking the BSL in DXY, during that we have to see the reaction from the area, that whether it is rejecting or closing. If it is rejecting, then we can expect the entire left out month will be the expansion towards the downside. But if it is closing above that, then it says that no, we need to reevaluate that the last low which just now I think Friday it has made. So that was the low or no for the month, and based on that we can proceed. And coming to the NAS, so when market is bullish, don't ever assume or try that sorting it. Okay, whenever you get the opportunity, try longing it as long as market is bullish. What happens that you will have back in your mind that market has expanded a lot, but nobody knows that what is that lot definition. How can you say that market will reverse from here itself or here? Many will say that standard deviation, correct, you can use that. But I personally against of that, that when market is bullish, that somebody will say that it will reverse, it can react from those areas, but reversal, no one guarantees that. Bro, I'm from little. I'm sorry. I'm from Tamil community, so my English is little poor. So just no problem, bro. No, no problem at all. So for me, again, price closed above these areas. So I'll be looking for the retest. Okay, that price can retest these highs which has market recently broke, and again it is the order block. So we can say that
market look for the things bullish, but straight away jumping from here, that won't be the case. Okay, uh, I'll be expecting slightly lower prices if it's managed to come towards these kind of fair value gap. Again, this high which was broken, okay, let me see, it was not retested, right? No. So market has not retested these areas, and again, market straight away never goes in one direction. How market moves, you see, we fail to plan the things. For example, market always, ICT says accumulation, manipulation, and distribution. You are a total soup trader, or whatever you are trader, CRT and everything is this only, right? CRT says that one candle is this area, right? Accumulation, manipulation, distribution. Or if you are a day trader, ICT says that Asia has accumulation, London has manipulation and distribution. So more or less everything is same. Okay. So here we assume that this is the key, right? Now you think every month you think it from this perspective. Every week you think it from this perspective. For example, recently we started for the December. Today is 8th of December. Market is opening on 9th. What phase we are having pending? We might be looking for these areas, right? So even if you are bullish, in a second week, if the market is coming down, that is good for the market. And you should look for the short opportunities, not for the long opportunities. So same thing applies here. Same thing if you see here, for example, market has broke these highs, but it has not retested it. So particularly I'll be looking for these areas, like, if price, what I can do is I'll wait for some sort of area, and if it has some sort of change in a state of delivery, so I'll be start looking for these areas, and again from these areas I'll be bullish only. So this is what I'll be looking, like, accumulation, manipulation, and distribution. Take it as CRT in a weekly candle, or take it as AMD, or whatever you feel it, you can name the terms, because I generally avoid taking the terms because more or less everything is same. CISD, correct, correct, correct. Change in the state of delivery. So this is what I'll be looking. More or less, we are looking for the manipulation phase. So in manipulation phase, if you are bullish for the month, look for the short trade. Simple as that. And how far? Maybe 10th, 11th. We have CPI on 11th, right? So we will expect that market will either manipulate before that, or with the CPI it will manipulate, and then it will go against the market. I mean, the current direction. Then there will be a reversal. Euro first taken SSL after goes long. I'm right. It has already taken, bro. No, sorry. Uh, market. One second. One second. One second. Euro, right? I'm talking here that market will come something like this. This you can see that. No confusion. USL, bro. I have spoken many times, so I think you may slightly reverse the video. You will find that. Just 10-15 minutes back, I was talking about the US oil. And I think that's all for today, I guess. We'll try it for. देखते हैं guys, ठीक है? आप लोग, if you guys can come, then will we keep doing it. Final two more questions. If you guys have anything, you can put it in the comment. Then I'll just wind it up. And I think bro asked, sorry, I missed the question, that do you take bond also? Sometime I take it, sometime I don't take it. But personally, I don't complicate things. Already DXY is there for looking for the euro and GBP. So most of the time I don't. But when there is no much clarity on the DXY, then I look for the bonds to get the clarity. That's all. If DXY is clear for me, then I don't go for the bonds. Nigga India.
GBP or euro, which is good for the week? For example, if I'm looking for thought, I am looking for the euro. Why? Because I'll tell you quickly here again. See here one thing. Euro overall is slightly bearish for looking for these area, right? You see it here. Price came to this fair value gap and it has rejected. So market has to come slightly down. But again, it's a daily. Maybe possible that one single candle will take out this SL, then the terms will get changed. You have to keep monitoring that. But until this is pending, then looking for short, I'll be looking euro. But if I have to long, then I'll prefer GU over ES. I mean, sorry, euro. Future demo account, bro. For demo account, you do not need anything. You just go with the trading view, na. Same bearish, bro. GBP USD view. But I am preferring EU because of this criteria just now I told you. Bro, explain what are the criteria of turtle soup, because many times I am expecting price to made. Yes, I'll quickly give you one example here. You see here. Uh, this was the trade, okay, which was on Tuesday. I took it. In fact, even if you ask me here, any time frame you can ask me, I'll be showing it. For example, you quickly come here. See this. Remove drawing, and this was Monday, and again I'm taking Monday to Friday only. uh, Forget about Saturday and Sunday. Okay, forget about Saturday and Sunday. What is TS? Or again, note it down these points. Nobody talks very, to the point. CRT is nothing but there will be a range, then there will be a manipulation, and there will be expansion. You call it as a CRT. You just taught it, taken as a, one single candle accumulation, manipulation, or distribution, or sometimes it can be. See, many says advance. I too call it, but it's not advance. Many times I can combine the candles also. If the candle has good expansion, then I take the entire candle as single candle. I assume in my mind that this is the one single candle. But all these are gimmick, even turtle soup, and everything is say all everything is same, MXM and these all things. The thing is simple as that. Market has three phases: accumulation, manipulation, and distribution. If you look it from the weekly perspective, right, again you have to profile the market. Without profiling, you cannot do anything. So now assume you are trading a weekly profile. So weekly profile means you have Monday to Friday, which is 5 days, right? So in a 5 days, and again I'm talking in neutral, there are certain factors which is newses that can change the slight deviation will occur in these things, like FOMC, CPI. These things are on different dates, means slightly it will differ. But again, we can trade that too. But in general, where there is a neutral news, like I mean, red news are there, but that is not that CPI or FOMC. In that case, in a 5 days you will have accumulation, manipulation, and distribution, right? And again, market, how it moves. Market opens, makes lows, makes highs, and close like this. So in a 5 days, for example, manipulation has to happen, expansion has to happen, then closing is there, opening is there, and one extra day is there, right? So you can say that in most of the time, market most likely that Monday it is accumulating, and if it is coming down on Tuesday, then it is most likely in a bullish market it is faking out or fluffing out these traders. So you need to buy here, but again straight away, no, not exactly. It should happen at a particular day, and there should be some sort of area which should support that. Okay, if price is hitting this area, it will bounce from there. And if it is happening that, you should go with the confidence that you need to buy that. There is no other go. Okay. So you see here, I'll show you example. This is the theory part, but you see here, what do you see here? This was right Monday,
and we have a key level here, right? We have a key level, and before key level you can ask me, bro, how the hell do you know that market is bullish, right? This is the important question. You told me that market is bullish, then do this one, but how do you know that market is bullish or not? TS means turtle soup. Yes, correct. So market, you start reading few candles. For example, market is closing above these highs, and when price retested this area, particularly the range area, which was, or you can say these order blocks, many will say these highs, I don't name at all, that is why I'm telling you. So what I saw, that there was a key level. Let us assume that there was a key area in this. Price came to this area, started breaking out these highs, like, it closed above this area, then again it closed above. So that says that market is likely bullish. And if it is a bullish market, where market is likely to head? It is likely to head towards the recent high which was shown. It can be these highs. So you will be looking that if you get any opportunity to buy before that high. Again, once market reaches these highs, none of your business. But before that, if you get any opportunity to buy, why don't you buy that? Right? So what I saw here is there was a Monday, price opened, and again, problem is Monday market opens and you rush into the market that you need to buy or sell something. That is not the case. You need to, patience is the key here. You should accept the fact that 70% of the time market stays in a consolidation, and what the hell we should do while market is consolidating? We'll do mistakes and we'll lose our money. The correct timing is 30% only when you have to trade it, and we never follow that. So that is the key which we are missing it, and as long as we'll be missing it, we'll not be able to make money. uh, I mean, me means, I'm telling the persons who are doing it, I'm trying you to correct it. For example, you saw here, now my bias is clear that I'm looking for these highs. After seeing this closing above these highs, price came to one key level, started going higher, closed. That says okay, fine, it is bullish. Now what I saw is Monday range was created, like, Monday open, I didn't do anything. And then what I saw is there is a key level which is your order block. At the order block, again, you put it here. Order block on Tuesday, I'm talking about the Monday low. Monday low was is getting taken, right? Again, go to the 1H. You see here. On Tuesday, particularly here in New York, okay, market is taking out the Monday range low at a key level. So once price closes here, this is your entry. And when you're buying it, it is never gonna to take your stop. See, market is always right. The problem is we uh, interpret wrong, right? So here, again, particularly talking about this fair value gap, so you can be longing it from here. And again, this was the signal given in my Telegram. I mean, I posted there. That is why I'm taking this example. So it was, first entry would have been here. This is your uh, turtle soup entry, right? This was your turtle soup. So here you can look for the longs. Stops will go below this area, and obviously target will be this. But I was slightly higher targeting, somewhere around 101 500. There was some reason for that. But again, the second type entry is, which is change in a state of delivery, which is CIST. And you see that market never closed below this order block. So second entry will be here. And from here you can target. So first entry from here and second entry from here. So this is how you should plan the trade. And trust me, if you follow the rules, definitely you will get the stops. It is for sure. It is not that nobody is immune that I'll not get the stops. If somebody is telling you that I'm not getting stopped out, probably fake. I am funded, continuously withdrawing money, but my win rate is somewhere around 60%. So saying that I don't get stopped out, see, you know why I have less followers? Because I talk to the point, and I don't talk shit, I don't sugarcoat the things. So that is why people don't like much, but this is what it is. So this way, if you do it, you are going to get the things which you are looking at. Say to hello Anna, hi Anna, how are you? I'm good. Give some key ideas, bro. Bro, we'll keep it for one more session because it's already delayed. So we'll talk. Bro, I learned ICT near 1 year. Now I start take trade. That's why I took my first trade in gold. It hits. Bro, no, do not take pressure. Go with the flow, because see, again, nobody can teach you. Even if you see that, take any course. In fact, I too have taken a lot of courses.
And it is fine that you can take the trade courses, but courses cannot give you the experience, and experience only teaches not to do the mistake. Somebody will tell you or can teach you the concepts, but nobody can give you or sell you the experience which he is having or she is having. For example, if you buy my program, for example, I'm telling you, not asking you to buy, I'm just telling you, then I can talk you what I do, what is the correct way to look into the markets, but I cannot teach you the experience, the fear, the confidence. All this comes from when you do own way, or you have lot of stops or take profits, then only it comes. So take it slowly, you will get to the correct way. Okay. A plus trader, I hope you got your answer right. The thing which you asked me, quickly confirm me, because I just I'll be closing the stream. I hope I would have answered, added some value for you guys about the turtle soup. Very simple. It's not complicated. The way I told you, no. You can see it. For one example, quickly I'll show you before he answers that. You see it here. For example, yes, I get it. You see it here. Again, it is slightly back one, but you see it here. That I told you in a weekly perspective. Now you see it in a monthly perspective. This was the start of the month, right? 30th September. Let's go to the October. 1st October. 1st October. This is your second week where it is starting. Here it is 7th. Let us put it here. You see here what it is happening. Accumulation. Market is manipulating on a second week. Again, there was a monthly level. Okay, I'll quickly show you. And you see the things happening here. I'm talking about in this area. I mean, sorry, there is a this area. There is a order. Fair value gap. You know, again, you see it here. Market came to some sort of, bro. I will tell that you told what I mistakes in the trades. Always. But it's always about SSL, liquidity, and BOS. That's it. Simple, na? I see. I don't complicate the things. Whatever works for you, it is very easy. Then it is easy. Simple as that. Never ever listen that somebody what nonsense somebody else is talking. So, for example, you see here. Let us try making it very easy. Just now you saw the weekly example which I was talking in daily. Now let us talk about one monthly example. And somebody is asking what to be the daily, that I'll give you the time frame. It's your job to do the back test. Okay. Here you see it's a monthly perspective. In monthly, what do you see is price. Again, start reading the bias. Bias is key. Without bias, it is going to be the difficult one, because it's a fact that it is going to be slightly difficult. So here we saw that price was in a range, coming to the lows closing, but again failing to go low, and it is going higher. It came and took out these lows, and we had again price pushing higher, and now we saw that once again it came down. You see it again. Try it in a most logical way. Simple as it. Be simple. You see here. Here, when price closed below this low, pull back. Again, it came below these lows, right? What happened? Again, pull back. But this time, it came below these lows? No. Before coming below these lows, it closed above these highs. Never happened here. Never happened here. Never happened here. That says somewhere market is bullish. Right? As long as price failing to close below these lows and breaking these highs. So now it is telling that it's bullish. But is it all to take the trade? No, not exactly. Again, now I have to look it from the weekly perspective. Accumulation, manipulation. So if it is happening after 10th or somewhere in the range of 10th or after the first week of the month, it is most likely that market is manipulating. And if there is a cases like that, then we can look into that. For example, there is a fair value gap.
which is key level, or you can take this order block also, which is fine, right? Now you see that first week there is a range, weekly to the 4H, okay, weekly to the 4H. I'm going here. After the first week, this is the first week, right? After the first week, you see here, market has taken out these lows. So when price is taking out these lows, it is your duty to confirm and trust your setup, right? You saw that market closed above, week one is formed here. There is a closing below these lows. So here you will be buying that. Correct? Or even if you fail to take the entry here, there was a smaller range formation, again price came to this fair value gap, you would have bought it here. So this is your simple as that range as a monthly accumulation, manipulation, and the rest is yours. You see that? Correct. Same way, I didn't added any masala. It's the same thing which I shown you in a weekly, the same thing I'm showing in a monthly, and the same thing I'm applying in a daily. If I have to see the daily, I look for my bias overall into the daily ranges, like I look it into 4H and I execute the things into 15 minutes. Simple as that. So this is how you can do it. So that's all for today. Tune it next time. I'll answer all your questions. So that's all guys. Bye bye. ठीक है, ध्यान रखना. आते हैं कल एक नया वीडियो आएगा about the liquidity runs. So stay tuned for the video. That's all. Bye bye.